Hey guys, I'm back with another video. As you all know, I really don't love throwing waste fabric. तो guys ये वही टी शर्ट है जिससे मैंने एक पिलो बनाई थी. तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो guys. I've shared the video on how to make a pillow from t-shirt. So yeah, check it first. सो गाइस वही टी शर्ट की ये रेस्ट पार्ट है. तो मैंने इसे नहीं फेंका क्योंकि मैं इसे बहुत अच्छा इनर गारमेंट्स बना सकती हूँ, वो भी पैडेड. सो आई ऑलरेडी पोस्टेड सो मेनी वीडियोस. यू कैन चेक ऑन माय चैनल हाउ टू मेक इनर गारमेंट्स फ्रॉम टी शर्ट. तो गाइस पहले मैं आई विल कट द स्लीव एंड द नेक पार्ट एंड देन सी द कटिंग ऑफ द ब्रा कप्स. Okay, so now I'm going to try my best to insert this round zip pad in this bra cups, but I'm sure this is not gonna work. Okay, I'm trying.
Guys, it's hilarious. It's so funny. LOL. So definitely this is not working, but don't worry. You can cut your round shape bra pad into a triangle shape bra pad. So I'm gonna show you guys because the reason it's looking so funny because the bra cups are in triangle shape. So I'm gonna cut these in a triangle shape as well. सो गाइस दिस इज़ द फाइनल लुक। और आपको अगर पैड पसंद नहीं है ब्रा पे तो आप साइड में थोड़ा सा कटिंग करके ये ब्रा की जो पैड है उसे आप निकाल सकते हो। यू कैन टेक आउट योर पैड्स इफ़ यू डोंट लाइक इट, बट दिस कैम रियली रियली गुड एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल। और मैंने इसे बनाने के लिए अपना नॉर्मल मशीन ही यूज़ किया है गाइस। सो थैंक यू सो मच।